Ladies and gentlemen, please help me welcome Honorable Minister of Tourism, Government of Gujarat, Shri Mudubhai Bera. माननीय मंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है. Today we have with us Dr. Darshana Ben Deshmukh, Honorable MLA of Narmada. We welcome you, Madam. We also welcome on the dais Shri Harit Shukla, IAS, Secretary Tourism, Government of Gujarat. Welcome, sir. We one more time welcome Dr. Saurabh Pardhi, IAS, Commissioner and MD, Director of Gujarat Tourism. Welcome, sir. We have with us Shri Ajit Bajaj, President, ATOAI. Welcome, sir. We have Shri Venkateshan Thatharan, the Regional Director of West, Central and South, Ministry of Tourism, Government of India. We welcome you, sir. We welcome on days Shri Anil Oro, the Regional Director, Northeast, Ministry of Tourism, Government of India. Welcome, sir. On the days, we also have Shri Vaibhav Kala, Convention Chairman and Vice President, ATOAI. Welcome, sir. Welcome, Mr. Vaibhav. We have with us Shri Tejbir Singh, Senior Vice President, ATOAI. We welcome him. Welcome. We have Captain Swadesh Kumar, the Founder President, ATOAI. We extend very warm welcome, sir. We have Shri Neerad Bhatt, the Co-Chairman this convention and also the Honorary Treasurer, ATOAI. We welcome. I think he's a little busy. Okay, he's here. Welcome, sir. One more time, ladies and gentlemen, can we extend a very big round of applause for all the esteemed dignitaries on the dais? Thank you very much. Now, in order to deliver the welcome address and set the tone of this ceremonial session, please help me welcome the Padma Shri Awardee and President, ATOAI, Mr. Ajit Bajaj. आदरणीय टूरिज्म, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर मुडुभाई बेरा जी, respected dignitaries on the days, पर्यटन सचिव हरीत शुक्ला जी, MD GTCL Dr. Saurabh Pardhi ji, and all respected members on the days. सबसे पहले मैं गुजरात सरकार का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें गुजरात में ग्रीन कारपेट वेलकम दिया और गर्वी गुजरात का अनुभव करवाया. कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गुजरात प्लीज? सर, आपकी गुजरात टूरिज्म की एफिशिएंट टीम के साथ मिलके काम करके ये पता चला कि गुजरात वाकई में वाइब्रेंट क्यों है. आदरणीय मंत्री जी, मैं आपको बहुत गर्व से बताना चाहता हूं कि हमारा कन्वेंशन कार्बन न्यूट्रल है. तो हमने हमारी टीम के सदस्यों ने हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है हमने कैलकुलेट किया, उसको कम करने के तरीके निकाले और जो भी हमारा कार्बन फुटप्रिंट है उसको हम ऑफसेट करेंगे. तो ये कार्बन न्यूट्रल इवेंट होगा. पेड़ भी लगाएंगे हम, ऑफसेट वेरीफाइड ऑफसेट भी करेंगे और सिंगल यूज प्लास्टिक हमने, जैसा आप देख रहे हैं, हमने उसका बिल्कुल प्रयोग नहीं किया कन्वेंशन में. ATOI में एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया में देश के दूर दराज हिस्सों से 600 ऑपरेटर्स हैं और आज यहां लद्दाख से लेकर केरला, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के सदस्य आए हैं. पैंडेमिक से पहले जो प्रोजेक्शंस थी उनके मुताबिक ग्लोबल एडवेंचर टूरिज्म वाज टू बी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री. और हमारे देश में भी, जैसा आप जानते हैं, एडवेंचर टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है. 73% हिमालय हमारे देश में है और जैसे कि हम आज सुबह भी बात कर रहे थे, 50 स्विट्जरलैंड हमारे सिर्फ हिमालय रीजन में हम कर सकते हैं.
लेकिन 7,000 किलोमीटर की हमारे देश में कोस्टलाइन है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हमारे देश की नेचुरल हेरिटेज को दुनिया में से सबसे 10 बेस्ट माना है। तो और हमारा लक्ष्य यही है, हमारी विजन यही है कि अगले 10 साल में वी वांट टू बी अमंग्स द 10 बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड। हम सोचते हैं कि गुजरात कैन ऑल्सो बी द ज्यूल इन द क्राउन ऑफ इंडियन एडवेंचर टूरिज्म। G20 के दौरान में मैं एक पर्सनल बात बताना चाहूंगा। गुजरात टूरिज्म एंड भारत सरकार ने मिलके हमें यहाँ रन ऑफ कच्छ में इनवाइट किया था और वहां देख के हम सभी लोग, दुनिया भर के लोग दंग रह गए। वी रियली थिंक इट शुड बी अ नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और धोलावीरा में जब हम जाके हमने देखा अपनी हमारी एंशिएंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हड़प्पन टाइम से है, ऐसा लगा कि यहाँ इतना पोटेंशियल है। हर जगह एडवेंचर ट्रैवल के लिए पोटेंशियल है। गुजरात में 1600 किलोमीटर की कोस्टलाइन है। यहाँ नदियां हैं, जंगल हैं, झीलें हैं, पहाड़, यहाँ सब कुछ है। और एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया विल बी वेरी प्राउड टू पार्टनर विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात टू अनलीश दिस पोटेंशियल, immense potential in a very responsible and sustainable manner. आज गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ कुछ MOU भी साइन होंगे और मैं आई एम वेरी प्राउड टू ऑल्सो शेयर विद यू कि भारत सरकार ने भी नेशनल बोर्ड फॉर एडवेंचर टूरिज्म सेटअप किया है। तो काफी चीजें हैं जिन पे देश भर में काम हो रहा है, जो हमारे पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने किया है। मॉडल लॉ, एडवेंचर रेस्क्यू सेंटर्स, मेगा ट्रेल्स, इंश्योरेंस, बॉर्डर टूरिज्म, वाइब्रेंट विलेजेस पर तेज रफ्तार से काम हो रहा है। तो एडवेंचर टूरिज्म एक नेशनल प्रायोरिटी बन रही है। कल भारत सरकार और गुजरात सरकार मिलकर एडवेंचर टूरिज्म पर एक सेमिनार यहीं पर एट द आइकॉनिक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में कर रहे हैं, जिसमें 18 राज्यों के पर्यटन के सचिव एवं सदस्य आ रहे हैं। एक चीज और है दैट आई एम वेरी प्राउड टू शेयर विद यू सर, कि हाल ही में उत्तराखंड में जब लैंडस्लाइड्स हुए, वहां आपदा हुई, तो ATOI ने तुरंत 2 घंटे के अंदर मोबिलाइज किया और एक टीम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के लिए वहां भेज दी। केरला में भी जब फ्लड्स हुए तो ATOI ने एक रेस्क्यू टीम तुरंत राफ्ट वगैरह लेके उत्तराखंड से भेज दी। इस साल हमने ATOI की एक टीम को NDRF से भी ट्रेनिंग करवाई है, ताकि देश में कभी भी ऐसी स्थिति आए तो हम तुरंत एक फोर्स मल्टीप्लायर बनकर मदद कर सकें। Once again, I want to say a big thank you to the government of Gujarat for your Atithi Devo Bhava welcome. Jai Jai Garvi Gujarat, Jai Hind. Thank you. आपके उष्मापूर्ण स्वागत शब्दों के लिए प्रेसिडेंट सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हम इस सेशन में हमारे जो अतिथि, गणमान्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का स्वागत करने के लिए अति उत्सुक हैं। सर्वप्रथम हम रिक्वेस्ट करेंगे श्री हरित शुक्ला, IAS सेक्रेटरी टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, कि वे माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिवादन करें। धन्यवाद। I now request Shri Ajit Bajaj, President, to welcome Honorable Minister, sir.
माननीय मंत्री जी, आज अरुणाचल प्रदेश से हमारे कुछ गेस्ट यहाँ पर उपस्थित हैं और वे वहाँ की अपनी ऐतिहासिक चीज़ों से आपका स्वागत करना चाहते हैं। मैं सर्वप्रथम बुलाऊंगी सेक्रेटरी स्वप्निल नायक, टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और साथ में जुड़ेंगे श्री के.एन. धाम, डायरेक्टर टूरिज्म, अरुणाचल प्रदेश। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। Thank you. We now request Mr. Ajit Bajaj to kindly welcome Dr. Darshana Ben Deshmukh, Honorable MLA of Narmada. धन्यवाद। अब मैं अरुणाचल प्रदेश से आए उनके सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर से विनती करूंगी कि वे हमारे एमएलए मैडम का स्वागत करें, अभिवादन करें। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ हैं श्री भीम सिंह जी तड़वी, जिला पंचायत प्रमुख। मैं श्री हिरेन पंडित, गुजरात टूरिज्म से नम्र निवेदन करूंगी कि वे उनका स्वागत करें, अभिवादन करें। धन्यवाद। I will now request Shri Vaibhav Kala, Chairman and VP, ATOAI, to kindly welcome Shri Harish Shukla, IS, Secretary, Tourism, Government of Gujarat. Thank you. Now request Shri Tejbir Singh, Senior VP, ATOAI, to kindly welcome Shri Dr. Saurabh Pargi, IS, Commissioner and MD, Director of Gujarat Tourism. Thank you. We'll now request Shri Hiren Pandit, Gujarat Tourism, to kindly welcome Shri Ajit Bajaj, President, ATOAI. Thank you. We'll now request Ms. Khyati Nayak, Gujarat Tourism, to kindly welcome Shri Venkateshan Thatarin, the Regional Director, West, Central and South, Ministry of Tourism, Government of India. Thank you.
We'll now request Ms. Madhuri Mistry, Gujarat Tourism, to kindly welcome Shri Anil Oro, Regional Director, Northeast, Ministry of Tourism, Government of India. Thank you. We'll now request Shri Sanatan Pancholi, Gujarat Tourism, to kindly welcome Shri Vaibhav Kala, Convention Chairman and Vice President, ATOAI. We'll also request Shri Sanatan Pancholi, sir, to kindly welcome Shri Tejveer Singh, Senior Vice President, ATOAI. Thank you. We'll request Shri Hirendra Dabhi, Gujarat Tourism, to kindly welcome Captain Swadesh Kumar, Founder President, ATOAI. We'll now request Shri Jaideep Bhatt, Gujarat Tourism, to kindly welcome Shri Neerad Bhatt, Co-Chairman, Convention and Honorary Treasurer, ATOAI. धन्यवाद। अब मैं इस अवसर पर श्री हरित शुक्ला आईएएस, सचिव श्री प्रवासन को नम्र निवेदन करूंगी कि वे अपना महत्वपूर्ण संबोधन दें। आटोया के इस कन्वेंशन में यहाँ मेरे साथ आए गुजरात राज्य के पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री मुड़ुभाई वीरा साहब, हमारे इस विधानसभा विस्तार की विधायिका श्रीमती दर्शनाबेन, जिला पंचायत के प्रमुख जी, मेरे साथी अधिकारी सौरभ, आटोया से आई हुई पूरी टीम, श्री अजीत बजाज जी, नीरज, तेजवीर जी, वेंकटेश जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव। First of all, let me take this opportunity to extend a heartily welcome to all of you for coming to Gujarat. It's our real privilege that you are all here, and we are really happy to organize this summit for you. We really wanted all of you to visit Gujarat and see for yourself what kind of efforts we are putting in. और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस चीज़ की हम बात काफ़ी समय से कर रहे थे वो आज फलीभूत हुई है और आज आटोया के सभी सभ्य यहाँ पे गुजरात में आए हैं। अजीत जी ने बात किया थोड़े समय पहले ही, इस चीज़ की जो पूर्व भूमिका है उसमें G20 समिट में we were sitting in some similar kind of setting and all the associations were there. We decided that we need to host associations to Gujarat. We need to bring all of them to Gujarat. और मुझे इससे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वाकया ये याद आता है कि इससे थोड़े पहले ही हमने माइस कन्वेंशन किया था, लगभग 10 दिन पहले, और हम बहुत चर्चा कर रहे थे कि इस ऐसी मीटिंग से रियली में स्टेट को बहुत बेनिफिट होता है। मेरे पास तो एक जीता जाता उदाहरण है कि G20 की मीटिंग में हमने चर्चा की और आज आटोया का कॉन्फ्रेंस हम यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में होस्ट कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद और अपेक्षा है कि ये सारे इवेंट से गुजरात में जो टूरिज्म का विकास शुरू हुआ है वो एक नई ऊंचाई पे पहुंचेगा। हमें सबको पता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात का नेतृत्व कर रहे थे तब अन्य वस्तुओं के अलावा प्रवासन पे, टूरिज्म पे भी उनका खूब फोकस रहा है। 2009 में मुझे याद है हमने प्रवासन वर्ष मनाया था और पूरे साल सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स ने टूरिज्म के लिए काम किया था। भले ही वो R&B डिपार्टमेंट्स हो तो उन्होंने रोड बनाने का काम किया, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो तो उन्होंने टूरिज्म से रिलेटेड काम किया। और इनफैक्ट सबसे बड़ा जो उदाहरण हम देख रहे हैं आज जिस जगह हम हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये जगह मैं बार बार बोलता हूँ कि इंडिया में दिस इज़ द फर्स्ट यू कैन से
man-made destination created of this scale. This is a greenfield tourism destination created where we have seen a footfall of more than 1.5 crore in last 5 years. और इस टाइप का जो टूरिज्म पे फोकस है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो शुरुआत हुई, जो टेंट सिटी आप यहाँ रुके हुए, मैं अभी लंच पे ही बात कर रहा था कि nobody would believe that this was created in 100 days. In 100 days from scratch it was created this entire town tent city. और वो जो प्रयास उस समय चालू हुए और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र पटेल साहब के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, उसका रिजल्ट ये है कि गुजरात अब ऑलमोस्ट लास्ट ईयर भारत सरकार के जो आंकड़े आए उसके हिसाब से फॉरेन टूरिस्ट जो इंडिया आते हैं उसमें द नंबर 1 चॉइस इज नाउ गुजरात. दैट इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मेनी, but that is the result of years of hard work being done by the state government under leadership of Honorable Prime Minister and CM. We were also fortunate to be in top 5 destinations as far as domestic tourism is concerned. पिछले कुछ दिनों में हमें यूनेस्को UNWTO का बेस्ट रूरल टूरिज्म का अवार्ड भी मिला, जहाँ पे हमने वो G20 का इवेंट होस्ट किया था धोरडो विलेज, उसको हमें वर्ल्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज का भी अवार्ड मिला. तो ये सारे टूरिज्म के जो प्रयास चल रहे हैं उसकी वजह से आज हमें खूब अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं. इसी श्रृंखला में यू ऑल नो दैट वी हैव बीन होस्टिंग लॉट ऑफ इवेंट्स. गुजरात इन फैक्ट इन लास्ट 1 year has been fortunate to host many big events. We hosted the World Cup, the IPL. Now we are going to host the 10th edition of Vibrant Gujarat Global Investor Summit. And also for the first time, Gujarat will be hosting the Filmfare Awards in Gandhinagar. So it is very rare that Filmfare moves out of Bombay, but it will be the state which will be hosting the Filmfare this year. So a lot of progress is happening in the tourism sector. Gujarat is a policy-driven state. There are numerous policies which we have brought for the betterment of tourism sector. We have a very vibrant tourism policy which enabled us tremendous growth in hospitality sector. मुझे याद है बहुत सालों पहले मैं अहमदाबाद में काम करता था, तब हम कुछ इवेंट्स करते थे तो हमारे पास होटल रूम की संख्या 200 से 400 हुआ करती थी. अभी वेंकटेश जी को भी पता है कि ऑलमोस्ट अहमदाबाद गांधीनगर में मिला के 3000 to 4000 rooms are available as far as 4-star and 5-star. That is almost a 10-fold increase in 10 years. This is a kind of growth trajectory on which Gujarat is already there. Besides that, we also have come up with heritage tourism policy, and recently we launched cinematic tourism policy. Today again we are very happy. Last 15 days back we signed a lot of MOUs for very big projects related to tourism, in which there were 15 projects of more than 100 crores. Total 40,000 crores plus investment is committed this year in tourism sector. पिछले 2 हफ्ते पहले भी हमने 5 बड़ी फिल्मों का फिल्मांकन गुजरात में होगा उसका अनाउंसमेंट किया था. आज भी हम कुछ बड़े अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं. इसके साथ साथ जो नए सेक्टर्स में हमें मेहनत करनी है, गुजरात हैज़ ऑलवेज बीन leading state as far as industrial development is concerned, and we get a lot of tourists in religious tourism and business tourism. But now we are also working in other sectors. Recently we had a convention of MICE, and this is the new sector, adventure tourism sector, in which we want to focus. मैंने बजाज अजीत जी को बोला था 2 साल पहले हमने इनबाउंड टूरिस्ट टूर ऑपरेटर्स को होस्ट किया था और 2 साल के अंदर गुजरात नंबर 1 बन गया. अभी हमने माइस का और एडवेंचर टूरिज्म का कन्वेंशन यहाँ होस्ट किया है. हमारी अपेक्षाएं बहुत ही सिमिलर हैं. 2 साल में हम गुजरात को माइस में और एडवेंचर टूरिज्म में भी नंबर 1 तरीके से देखना चाहते हैं. आई एम वेरी हैप्पी. आपके फैम ट्रिप्स में आपने गुजरात के पोटेंशियल को देखा होगा, अलग अलग जगह को देखा होगा. कई जगह डेवलपमेंट की शुरुआत हो रही है, कई जगह अभी इनिशियल स्टेप्स लिए जा रहे हैं. लेकिन मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि गुजरात सरकार ने एक बहुत ही फोकस्ड अप्रोच के साथ टूरिज्म को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है. जिस तरीके से इस डेस्टिनेशन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को आप देखते हैं, जो एक कंप्लीट डेस्टिनेशन है जहाँ पे आके आप 3 दिन से 7 दिन तक रुक सकते हैं और हर प्रकार के ऑडियंस के लिए यहाँ एक अट्रैक्शन आपको मिल जाएगा. भले बच्चे हों या ओल्ड एज के हों या इको एंथुजियास्ट हों, हर प्रकार के लोगों के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है. और यहाँ पे भी अभी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से आगे हो रहा है. इसी तरीके के 5 आइकॉनिक डेस्टिनेशन पूरे गुजरात में अलग अलग विस्तार में बनाए जा रहे हैं. और उसके लिए लास्ट बजट में गुजरात सरकार ने
रेवोल्यूशनरी स्टेप लेते हुए एक डिपार्टमेंट का बजट सीधा 3 गुना किया, और उसके लिए अब हम इन 5 जगह पे काम कर रहे हैं। हमारे फैम ट्रिप्स में आपको जो हम अलग अलग जगह लेके गए, उन सब जगह अभी डेवलपमेंट का काम चालू हो गया है। मुझे बहुत ही खुशी है कि आपने जिस तरीके से अपना कन्वेंशन किया, जिस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया प्रोफेशनली, और ख़ास करके इसको जो कार्बन न्यूट्रल इवेंट आपने बनाया, उसके लिए मैं आपका और आपके एसोसिएशन को खूब खूब बधाई देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि टेक दिस एज अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी। You have come to Gujarat. If you find any potential of your interest, kindly let us know. We are committed. Gujarat government will make every effort possible to make your business possible in Gujarat. Through your progress, we want to progress, and through our progress, India will progress. जैसे कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, हमें बहुत खुशी है कि आपने कुछ दिन गुजारे हैं गुजरात में। अब आपके थ्रू और आपके बिजनेस के थ्रू हम चाहते हैं कि सारी इंडिया से जो एडवेंचर एंथुजियास्ट है वो कुछ दिन गुजारे गुजरात में, और हम सब की प्रगति हो। वंस अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड काइंडली फील फ्री टू रीच आउट टू मी इफ देयर इज एनीथिंग गुजरात गवर्नमेंट कैन डू फॉर यू। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच। सर, आपके विशेष संबोधन के लिए आपके हम आभारी हैं। आज इस कन्वेंशन में हम आपको गुजरात के विविध एडवेंचर स्पॉट्स दिखाना चाहते हैं, जिससे कि आप अपनी आगे की जो एडवेंचर टूर है वो प्लान कर सके, और हमें एक बार गुजरात गवर्नमेंट को मौका दे कि हम आपका सत्कार कर सके, स्वागत कर सके। आइए इसी उपलक्ष्य में देखते हैं एक फिल्म। Under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and the guidance of the Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel and the Honorable Tourism Minister Shri Mulu Bhai Bera, the glorious Gujarat is geared up with a treasure trove of numerous adventurous experiences. The state offers an array of adventure sports. Hello. Done with that boring day-to-day routine? Are you done chasing those deadlines? It's time to awaken the dead spirit of adventure within. Yes, it's about time to recharge, recall, and rejuvenate the inner child. It's time to go wild. Hello and welcome, adventurers. Today, I'm here to take you on an enthralling journey through Gujarat's exciting and unique terrains. Be it infinite desert, high hills, dense forests, deep waters, or beautiful skies, the geographical diversity of Gujarat make it a desirable destination for various outdoor and nature-based activities in the realm of eco and adventure tourism. How soothing and surreal would it be to experience kayaking at the World Heritage City, Ahmedabad's scenic Sabarmati riverfront. The cultural city of Gujarat, Vadodara, also offers a meditative and calming experience of kayaking. With scenic sunrises and sunsets. Now, let some adrenaline kick in. Navigate the currents and embrace the unity, where the Statue of Unity meets the River of Thrills at Kalvani. Dive into the heart-pounding excitement with river rafting. Feel the rush. Witness unity at the SOU, Ekta Nagar. Soar above the sea waves in a parasailing adventure at Kutch.
Brace yourselves for an exhilarating experience amidst the crystal clear waters of Mandvi Beach. From the sea to the sky for pure exhilaration. Enjoy a sofa ride and rev up your adventure with speed boating. Soar above the stunning white desert in the Run of Kutch with an unforgettable hot air balloon ride where the earth meets the sky. Go for a paramotoring ride to witness a dance with the winds on nature's canvas. Ever wondered how charming the life beneath the oceans is? Dive into the secrets of Dwarka to find out. A scuba dive to explore enchanting marine life. Immerse in the beauty of Shivrajpur above and below. Go snorkeling or ride a jet ski at Shivrajpur to feel the thrill. Dare to glide where eagles soar. From the hilltops to the horizon, the hills of Saputara await you. Trust me, it's a gravity-defying fun. You can try rock climbing and rappelling too. Feel the power of the rocks beneath your fingertips. This is where nature meets adventure. How about taking a stroll in nature's lap? Gujarat has a string of numerous eco-tourism sites. If you love to trek, Polo Forest, Jambu Ghora and Saputara offer this opportunity in dense forests and lush green surroundings. These sites provide breathtaking views and a fantastic camping experience for those seeking adventure and a chance to reconnect with nature. Are you passionate about zoological diversity? Gir National Park for the Asiatic lions, Nal Sarovar and Ramsar Lakes, Khijaria Bird Sanctuary for bird watching, as well as Little Run of Kutch for wild ass, Ratan Mahal Bear Sanctuary, and many other sites across Gujarat are ready to be discovered. Imbibe the patriotism at Nada Bait for border tourism. Gujarat's dedication to safety and sustainability aligns with the adventure travelers' commitment to eco-consciousness. With trained professionals, proper equipment and training at each adventure site, you can embark on a safe and responsible journey to Gujarat. The warmth and welcoming nature of the people and the perfect climatic conditions around the year add a friendly touch to the thrilling quests across Gujarat. Witness the wedding of culture, nature and adventure. Gujarat, an adventurer's heavenly abode. With so many scenic beauties, the applause was little less. Can we have a grand applause for these wonderful, developed scenic beauties of Gujarat? Thank you, and we wish that you plan very soon a trip to Gujarat again. A draft strategy and registration form for adventure tour operators focus area. So safety guidelines and regulatory system, including registration, certification, key communities and sub-comments with the roles and responsibilities are prepared. मैं माननीय मंत्री महोदय एवं सभी मंचस्थ अतिथियों से इस ड्राफ्ट पुस्तिका जिसे गुजरात टूरिज्म ने बनाया है उसका अनावरण करने का नम्र निवेदन करती हूं.
आज हम जहां बैठे हैं पवित्र नर्मदा मैया के किनारे, वहां खास एडवेंचर रसिकों के लिए एक मेगा नर्मदा रिवर ट्रेल डेवलप किया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय को डिजिटली लॉन्च करने के लिए नम्र निवेदन करती हूं इस मेगा नर्मदा रिवर ट्रेल को। नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा परिक्रमा यानी संस्कृति, साहस और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा समन्वय। अब होगी यह नर्मदा परिक्रमा पहले से सुलभ। गुजरात सरकार है जो कटिबद्ध। एडवेंचर और रूरल टूरिज्म होगा वेगमान। नर्मदा मेगा ट्रेल की नई छवि होगी विद्यमान। प्रदान होगी बुनियादी सुविधाएं, रोजगार की बढ़ेंगी आशाएं। होगा नवीनीकरण ऊर्जा का अधिकतम उपयोग। कार्बन फुटप्रिंट होगी कम। तो आइए और पाइए प्रकृति की गोद में साहस के साथ आध्यात्मिक आनंद का अनुभव। नर्मदे हर। मैं यूपी टूरिज्म के सेक्रेटरी साहब को ऊपर बुलाना चाहूंगी। वे माननीय मंत्री श्री का स्वागत करना चाहते हैं, अभिवादन करना चाहते हैं। He wants to gift a coffee table book, Shri Ashwini Kumar Pandey ji. So we can help you, please. बहुत-बहुत धन्यवाद. Today on this pre-vibrant event of ATOAI and also of the Gujarat tourism, we wish to exchange some important MOUs in the august presence of our Minister Sir, Shri Munubhai Beraji. Foremost, we would like to call Mr. Ajit Bajaj, President, we have this project details of motive to identify Gujarat as a year-round adventure tourism destination, and ATOAI will support implementing regulatory system, develop new adventure tourism destinations and circuits. And the MOU from the Gujarat tourism will be exchanged by our very own MD and Commissioner of Tourism, Dr. Saurabh Pardhi. Yeah, we just have the exchange, sir. Yeah, the team at ATOAI can join for the exchange because these are very important MOUs getting exchanged. Good luck. Next we have from the Holiday Moods Adventures Private Limited, I would like to call Mrs. Arshdeep Anand, the director, and the project is to offer an unique immersive tours showcasing travel chronicles and inspiring journeys and training activities for adventure tourism. I would also request Dr. Saurabh Pardhi to exchange the same. We are extending lots of good wishes. Next, for the next MOU, I would like to call Sejal Thakkar, Director, Nidus Enterprises Private Limited, and the MOU is for the support in identifying and conceptualization of adventure tourism destinations and circuits and skilling at destination programs. We'll request Dr. Saurabh Pardhi to do the exchange, please. Thank you.
Next we have is InMe Learning Private Limited, and I would like to call on stage Mr. Ronnie Gulati, the Managing Director. And the project is to design and facilitate a camping and outdoor education program for youth of the state of Gujarat. And I request Dr. Saurabh Pardi to again exchange the MOU. Thank you very much. Next we have Mr. B. Shekhar Babu, the Managing Director of Transcend Adventure Private Limited. The project of this is to cultivate an ecosystem for engaging in extreme adventure tourism activities by supporting with training, logistics and guiding for extreme expeditions in mountaineering and other adventure tourism activities. Welcome, sir, and request Dr. Saurabh Pardi to exchange the MOU. Thank you very much. We now move towards the MOUs of other infrastructure and film shooting. And for the same, I would now request foremost Mrs. Deepa Sahi, the director, very renowned director. It is for film shooting, and she's the director of Maya Movies Private Limited, and the project is Jai Somnath movie shooting, which is to be done. And I request Dr. Saurabh Pardi. Sorry? Okay. I will request Shri Harit Shukla, sir, our Sachiv, to do the exchange. We congratulate on this MOU. Next we have is the Merry-Go-Round Studios LLP, Mr. Umesh Shukla, the director, and the film shooting which is going to happen is for Jaisal Toral. Welcome, sir, and request Shri Harit Shukla, sir, to take up the MOU exchange. Congratulations and good wishes. We would now like to call Mr. Ketan Mehta, a very well-known and renowned director, and plus Mr. Aturish Trivedi from Maya Digital Media to sign an MOU and exchange the MOU for investments infrastructure with the government of Gujarat, the tourism department, and request sir to kindly take up the exchange, please. Thank you. Congratulations and good luck, sir. Next, we have the Our World Leisure Limited. And for that, I would welcome on stage Mr. Dharam Chudasma, MD and co-founder. It's going to be a world-class entertainment zone. And for that, I would request, sir, to take up the exchange, please. Welcome, sir. And Arya Chudasma is also joining in the exchange. Congratulations and good wishes. Next, we have the project for 4-star plus resort, conference area, convention area, spa by Technopolis Townships Private Limited. And now for that, I call Mr. Nirav Mahadevia, the CEO, to have the exchange with the Tourism Department, Government of Gujarat. Welcome, sir. And request Harit, sir, to kindly take up the exchange, please.
Congratulations and good wishes, sir. आज इस अवसर पर बहुत सारे MOU यहाँ पे एक्सचेंज हुए हैं. उन सभी को हम अभिनंदन देते हैं और उनको शुभेच्छा देते हैं. बहुत बहुत तालियों के साथ. धन्यवाद. इस अवसर पर आज हमारे माननीय मंत्री महोदय, प्रवासन मंत्रालय, गुजरात सरकार उपस्थित है. मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ माननीय मंत्री श्री मुनुभाई बेरा को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ. आइए बहुत बहुत तालियों के साथ उनका स्वागत करें विशेष संबोधन के लिए. मंच पर विराजमान विधायका महोदय श्रीमती डॉक्टर दर्शनाबेन देशमुख, गुजरात पर्यटन विभाग के हमारा सचिव श्री आरित शुक्ला जी, TCGL GMD सौरभ बारगी जी, एंडवेज सर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ना प्रेसिडेंट भाई पद्मश्री अजीत बजाज जी, भारत सरकार के टूरिज्म के रीजनल डायरेक्टर श्री वैकेंद्रन जी, अनित वोरा जी, वैभव काला जी, तेजवीर सिंह जी, कैप्टन स्वदेश कुमार, निरंजन भट्ट और यहाँ उपस्थित आप सब पधारे हुए सब महानुभाव और मीडिया के मित्र. यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के इस सुंदर परिसर में आयोजित 15th एडवेंचर टूरिज्म कन्वेंशन में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी होती है और आपका सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ. आप सभी जानते हैं कि गुजरात देश के बड़े टूरिज्म डेस्टिनेशन में से एक है और लाखों लोग हर साल यहाँ गुजरात में विजिट करते हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में गुजरात ने टूरिज्म सेक्टर में जो ख्याति हासिल की है वह अतुलनीय है. प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर कई ऐसे प्रकल्प शुरू किए जिसने गुजरात के पर्यटन सेक्टर की दिशा और दशा दोनों बदल दी है. गुजरात में पहाड़, जंगल, समुद्र तट, हेरिटेज प्रवासन, ऐतिहासिक स्थल, तीर्थ स्थान और यात्राधाम जैसे अनेक टूरिस्ट अट्रैक्शंस है. इस तरह सरदार साहब को समर्पित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी गुजरात के पर्यटन सेक्टर की शान बन गई है. हाल ही में दिवाली की छुट्टियों के दौरान 42 लाख से अधिक टूरिस्ट ने गुजरात के प्रमुख प्रवासन स्थलों का विजिट किया है, जो एक तरह से गुजरात के टूरिज्म सेक्टर की सक्सेस को बयां करते हैं. गुजरात का टूरिज्म सेक्टर आज न केवल विश्व के मानचित्र पर एक आकर्षक पर्यटन स्थल में रूप में उभरा है, बल्कि इन टूरिस्ट साइट को अब इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है. अभी पिछले महीने की संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा धोरडो को बेस्ट टूरिज्म का सम्मान दिया गया है और अभी कुछ ही दिन पहले यूनेस्को ने गुजरात का जो गरबा है उनको अमृत सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है. माननीय हमारा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात लगातार अंतर्राष्ट्रीय सम्मानित मिले हैं. हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है. हमारा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात टूरिज्म सेक्टर को और तेज गति से विकास किया जा रहा है. गुजरात में आने वाले
टूरिस्ट अपने साथ यादगार पल लेकर जाए इसके लिए हम टूरिस्ट साइट में बुनियादी सुविधाओं से लेकर आधुनिक सुविधाओं तक की व्यवस्था कर रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमने कई पॉलिसी भी लागू की है, जिनमें से टूरिज्म पॉलिसी, हेरिटेज पॉलिसी, सिनेमैटिक पॉलिसी प्रमुख है। आज हम इस इवेंट के माध्यम से एडवेंचर टूरिज्म जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ATOAI और गुजरात सरकार का संयुक्त रूप से ये इस इवेंट को आयोजन कर रही है। टूरिज्म सेक्टर में ग्लोबल GDP में यह सेक्टर को बड़ा रेवेन्यू जनरेट है और न केवल उस देश की इकोनॉमी में योगदान देते हैं, बल्कि यह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी देता है। गुजरात में भी एडवेंचर टूरिज्म को लेकर कई बड़ी संभावनाओं है। हमारा गुजरात विविध भौगोलिक क्षेत्र से समृद्ध है। हमारे राज्य में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, पोलो फॉरेस्ट, जम्बू घोड़ा फॉरेस्ट, गिर के जंगलों, सापुतारा, शिवराजपुर बीच जैसी कई साइट्स हैं कि जहां एडवेंचर टूरिज्म को लेकर काफ़ी स्कोप है। आज के इस इवेंट में हमारा सहभागी एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सभी साथियों को भी मैं धन्यवाद और शुभकामनाओं देना चाहता हूं। आपके सहयोग में से हम गुजरात में एडवेंचर टूरिज्म सेक्टर को और बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है कि आज के इस इवेंट में एडवेंचर टूरिज्म सेक्टर को हम सार्थक चर्चा करने में सफल रहेंगे और साथ ही साथ इस इवेंट के माध्यम से इस सेक्टर के ग्रोथ को लेकर हम ऐसे आउटपुट निकाल पाएंगे कि जिसका लाभ पूरे देश को मिलेगा। मैं एक बार फिर यहाँ उपस्थित आप सभी का, महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इवेंट की सफलता की शुभकामनाओं करता हूँ। धन्यवाद। जय जय गरवी गुजरात। हमारा सचिव श्री बोल रहे थे कि अरुणाचल ने विशेष सम्मान क्यों किया, तो सुबह यहाँ अरुणाचल का CM भी बोल के गया और मैं भी बताऊं कि मैं द्वारका का हूँ और वो अरुणाचल का है। तो वहाँ का रुक्ष्मणी जी हमारा भगवान कृष्ण था, उनको और हर साल माधोपुर का मेला जो में भी ये सब आते हैं और वहाँ भी बताते रहते हैं कि हमारा एक अलग प्रकार का रिश्ता है। इसलिए यहाँ अरुणाचल राज्य का जो कोई प्रतिनिधि आया है उनने हमारा सम्मान किया, उनका विशेष अभिनंदन करके मेरी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। माननीय मंत्री श्री, आपके प्रोत्साहनपूर्ण संबोधन के लिए और आपकी प्रेरक उपस्थिति के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गुजरात के वैविध्य सभर भौगोलिक परिस्थितियों का विधिवत अभ्यास करके ATOAI की टीम ने गुजरात ईयर राउंड एडवेंचर डेस्टिनेशन बनाने के लिए एक रोड मैप और रेगुलेटरी सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए एक टूल किट तैयार किया है। वो ATOAI के बिहाफ पर मैं श्री नीरद भट्ट, श्री प्रदीप मूर्ति, श्री सोइटी बनर्जी, उन सभी को आमंत्रित करती हूं कि वे इस टूल किट को गुजरात सरकार को सुपुर्द करें, समर्पित करें। They have taken a lot of efforts and patience, especially to create this toolkit so that we can have the year-round adventure destination Gujarat for all the adventure enthusiasts.
Can we extend a big round of applause for all the efforts taken up by the ATOAI team? Thank you. Thank you so much for your wonderful efforts. अब मैं डॉक्टर श्री सौरभ पारदी, IAS, MD एंड कमिश्नर गुजरात टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से नम्र निवेदन करूंगी कि वे आभार विधि करें। आज के 15वें ATOI के एनुअल कन्वेंशन में उपस्थित गुजरात राज्य के माननीय मंत्री श्री मुरुभाई बेरा जी, नर्मदा MLA, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी हरित सर, ATOI टीम के चेयरमैन अजीत बजाज जी, सभी एस्टीम्ड मेंबर और आप सभी डेलीगेट्स का मैं गुजरात सरकार की तरफ से, गुजरात टूरिज़्म की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा व्यक्त करता हूं कि आज के जो इस कन्वेंशन में 2 दिन 3 दिन चलने वाले इस कन्वेंशन में जो भी डेलिब्रेशंस होंगे, जो भी चर्चाएं होंगी, वो एक गुजरात को एडवेंचर टूरिज़्म में एक नया आयाम प्राप्त करने में मदद करेगी और इसी आशा के साथ मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू सो मच। आपके ऊष्मापूर्ण आभार शब्दों के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंचस्थ विराजमान सभी महानुभावों को निमंत्रण दूंगी कि वे आगे पधारें ताकि हम एक ग्रुप फोटो ले सकें। Be careful. सभी मंचस्थ उपस्थित गणमान्य अतिथियों का हम धन्यवाद करते हैं उनकी प्रेरक उपस्थिति के लिए। खास हम माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करते हैं कि वे यहाँ पधारे। उनके उद्बोधन के लिए और उनकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। We have a very experienced keynote speaker today with us, Mike Drews. So I request everyone to keep settled yourself and fasten your seatbelts to enjoy the keynote address from Michael Drews. Mr. Mike Drews, a former competitive canoeist from Great Britain, transitioned to a successful career in rafting and coaching. As manager of field-free rafting in Europe from 1985 to 1989, he pioneered commercial rafting in the Austrian Alps. Later, he coached the Canadian national canoe slalom team at the Barcelona and Atlanta Olympics. Since 2000, Mike has been the Olympic team canoe slalom coach for Australia in multiple Olympics. In 2018, he shifted to coach education and embarked on extensive through hiking, including the 4,200 kilometers Pacific Crest Trail. Mike remains dedicated to promoting whitewater canoeing globally and advocating for women's participation. So, ladies and gentlemen, without wasting a moment, please help me welcome Mr. Mike Drews. Hello, sir.
setting, display setting. Oh yeah, it's okay. No, it's good. Yeah, it's good. It should be okay. नहीं है, not connect. Not connected. Let's try one more. This is connected. Yes, is Yeah. a Okay. Okay. Okay, thanks very much. It's a real honor to be here and to be invited. And I'd like to, thank everybody who's organized and made me so welcome. It's an incredible gathering, and everybody that I've met so far has been all doing amazing things in adventure travel. So it's great for me to be a part of it. So I first came to India in 1989 and did some rafting expeditions with Ajit, and I was really lucky to sort of see the country through the eyes of Ajit and Shirley, and they helped me fall in love with the country, and I've been coming back many times ever since. So it's a real joy to be here. So today, with the theme of the mega trails that we've been talking about already, this is a real super trend in adventure travel around the world. There's a massive explosion in the growth of people doing long distance overnight hiking, and particularly these longer trails in North America, in Europe, and even Australia, New Zealand, and even Jordan is just promoting a long distance trail. So it's really something that's becoming incredibly popular, and I think done right, these new mega trails in India can really go to world class. So what I'm going to talk about today really is my own personal experience of hiking long distance trail, and share some of the lessons that I learned along the way, because the trail is a great teacher, as I'm sure a lot of you know, and so I really experienced a lot of learning about myself and learning about nature while I was on trail. And then at the end, I'd like to share some of my experience and other people's experience of what contributes to a great trail. So when I knew I was doing this, I put the message out to the through hiking community and the long distance hiking community, and they all shared their thoughts on what makes a great long trail. So we can talk about that at the end. But so it's going to be a little bit different. Some of the other presentations really talking about my personal experience and what I learned from hiking 4,200 kilometers, which is a long way, and you have a lot of time to think. So this is my experience. First of all, you've heard a little bit about me, but you're probably thinking, why is Mike here? Why is he talking about this? So my background is a whitewater kayaker, and that moved on to being a raft guide and then managing the first commercial rafting company in Europe. And that's where I was lucky enough to get to meet Ajit. And then that moved on to me returning to my roots of whitewater kayaking, and lucky enough to be coaching at the Olympic level for a long time and have some success. So I've been really grateful to have that career. But more recently, I've stepped back from being on the road with coaching, and now I'm doing a lot more coach education, and I have time to indulge in my hobby of hiking long trails. So first of all, just a little bit of an introduction to what is the Pacific Crest Trail. So it's a trail that goes from Mexico
to Canada through the mountains in the west of the US, through the southern deserts of California, through the Sierra Nevada mountains, through into Oregon and the Cascade Mountains into Canada. So the elevation change is 128,000 meters. So that's sea level to the top of Mount Everest over 14 times. So I know a lot of people in this room have been to the top of Mount Everest, so I'm sure you'll know what it'd be like doing that 14 times in a row from sea level. So there's a lot of work involved, and the highest point is over 4,000 meters, and the lowest point is 40 meters above sea level. So there's a lot of range in the trail. And now you're probably thinking, why, Mike, would you do that? That's a pretty crazy thing to attempt. And so part of the reason that I wanted to do it is I've been doing some shorter, still long hikes, and really got addicted to it, I guess. I did a 600-kilometer hike across Germany, a hike across the Pyrenees with my son from the Atlantic to the Mediterranean, and then a 1,000-kilometer walk in Western Australia that goes through from the beaches of the south to Perth. And these are all great designated long trails. And so I learnt about the Pacific Crest Trail, and this is the granddaddy of them all, and I thought I should find out if I can do it. Can I do it? And to really test myself. So the first thing in any long hike like this is really the preparation, and there's a lot of gear, organization, a lot of delving into what do you need. There's a lot of ultralight equipment that you can buy, and I tried to be sensible and be lightweight without going crazy and going down too much of a rabbit hole into the ultralight world. But the other preparation you have to do is permits, and there's only 50 permits a day between March and May that are issued to hike this trail. It's a way of controlling the use and the damage to the trail by hikers. And this is massively oversubscribed, so you're really lucky to get a permit. And part of the permit process, interestingly, from some of our discussions earlier today, is that in order to get your permit, you have to go through online education on the leave no trace principles and how to hike with no impact. So it's a way of keeping the trail in pristine condition, and I think that's a really great strategy to adopt. So really, I'm going to talk about some of the lessons that I learned, and this is my personal reflection, but I hope you can relate to some of these things as well. So the first thing that really came to me was setting a big goal like this has a huge power to it. So setting a big, scary goal, you're not sure if you can complete it, and that guided me in all my decision making, all my preparations, the whole way through the hike. That goal was walking alongside me, helping me make good decisions, and it was the lens which I saw everything through. I'm an Olympic coach, so I know about goal setting, but this is a mega goal that really focuses you to help create those little goals, and I think that's a lesson for life, not just for my through hike. So let's get hiking. This is the start. So there's a lot of ritual around the start. There's a monument, the Southern Trail Monument. You get the shuttle bus from San Diego. There's infrastructure for the hikers to take them and drop them off, and then you can reach through. That's me reaching through into Mexico, through Donald Trump's border wall that all the fuss was about. So thank you, Donald, for that. And then you set off onto the trail, and the first part is the desert, which is 1,100 kilometers of really hot, dry terrain, still mountainous, and this is about really learning about being a long-distance hiker, getting your trail legs, meeting the other hikers around you, finding some support from them,
and really learning about how much food do I need to carry each day, how much water do I need to carry, and getting that right. So there's a lot of learning in this desert section. So these are the water sources. We're filtering all our water because a lot of the time it's quite sketchy water conditions, and you have to be really sure that you can be safe with the water. Unless you're above about 9,000 feet, you're always filtering your water. We're cowboy camping, so no tents, it's dry, there's no bugs, there's incredible stars at night, so no pitching the tent in the desert, incredible opportunity to just sleep cowboy style. Which brings me to my next realization, really, is that preparation beats planning. So on the beginning of the trail, you've got all these things that you expect to happen. You've got it all lined up. You've got your spreadsheet of where you're going to be when, and where you're going to resupply, and all of these things that you think are going to happen. And of course, day 1, day 2, day 3, nothing eventuates as you expected, and the place you were going to get your food isn't open. The place that you could recharge your batteries wasn't open, and you've got to really start to adapt. And what you realize is that if you've prepared, if you're fit, your equipment's good, you've got a problem-solving mindset, then you can deal with anything. And so, yeah, preparation is the best thing. And as the famous boxer Mike Tyson said, everybody has a plan until they get punched in the face, which is true. I think you have to be ready for anything. So we're heading off into the desert, and water is life in the desert. I'm sure you all know that. And these are water caches which are maintained by volunteers, maybe ex-hikers or friends of the trail, that they ensure that there's water for the hikers, clean water for the hikers. Otherwise, you couldn't make it through these desert sections. It's just too far to carry the water. So amazing effort from people supporting the trail and the trail community. Then we get to the top of, this is Mount San Jacinto, which is the first over 10,000 foot mountain. Incredible views over the Mojave Desert, and Palm Springs is down below. And you're really enjoying the first mountain of the trail. And then this is Mount Baden-Powell, named after the founder of the scouting movement. And that's me filling up with water and electrolytes. And you can see we're doing a lot of sweating in the desert. My Japanese hiking buddy called me Mount Fuji because of the pattern of sweat on my hat, because it looks like the snow on Mount Fuji. So lots of adapting to the desert environment. In fact, we were starting extremely early, hiking till late morning, and then trying to find shade and resting in the middle of the day, and then night hiking through the rest of the day until late into the dark. So still in the desert, carrying on. You can see it's a beautiful, beautiful landscape. I'm in each of those photos. I don't know if you can see us in tiny figures, tiny little stick figures. So the next realization is, it sounds simple, but you can do hard things. You realize at home and at work, you're trying to find the line of least resistance. You're doing things in the easiest way you can to get through the day. And then when you're on a trail like this, every day you're setting up a really challenging situation for yourself and deliberately taking on hard challenges. And this is a great realization. You toughen up, you get a lot stronger, and you get a lot of confidence, and you think, maybe I can do this. So still in the desert, you can see the flowing water is pretty special to cool down, and we're enjoying every one of those moments. Sometimes we'd end up after night hiking and not know where we'd camped, and then you could wake up to a beautiful sunrise, the cloud base below you, and really some amazing sights. So the next realization for me was about asking for help. This is a huge part of
doing a long journey like this is the community that is there to help. And I'm a big one for helping people. I love helping people, but I've always kind of felt, you know what, it's a bit of a sign of weakness to ask for help. But in fact, those two ideas aren't compatible. You've got to be help and receive help in equal measure. These people love to help, and they want to be part of the trail experience, and that's something I think we can incorporate with these new mega trails, is that people along the trail become part of the journey. So these are all people that were giving us lifts, cooking food, sharing whatever they had. So yeah, still very small in the vast desert environment. And then just a tiny little bit of water was precious to wash your shirt, and that's me getting water out of a concrete tank. It's tough. It's not all Instagram suitable images along the trail. So we're becoming through hikers and learning about the challenges of the trail. So then we get to this place called Kennedy Meadows, which is actually the end of the desert and the beginning of the Sierra Mountains. So it's a very important place. A lot of hikers gather together. You can see this is a village, 200 people population. So the through hikers have a massive impact on this place. And it's pretty special because when you arrive, you get a round of applause. Everybody's standing out on the veranda of the general store, and they cheer you in because you've finished the desert, and really if you can make it that far, you can probably make it all the way. So this was our first day of rain, 35 days in, and it hasn't rained. So we're smiling because we've reached through the desert, and we're happy because we're having our first rain. And also hiker hunger is a thing, and we're all eating way more, probably 3 times what you would normally eat. And this is the constant battle I lost about 13 kilos while I was hiking the trail, and I was eating as much as I possibly could. So this is something you really need to pay attention to. So you can see we're all a community now. These are all strangers. We all started on our own, and now we're together. So that was the next realization, really, is this trail and the long trails, they're about the people much more than I thought the trail would be about the landscapes, about the views, about the challenge, the physical challenge. But in fact, it's about the people that you meet and the bond that you make with these total strangers from all over the world that you're thrown together with. And I'll be lifelong friends with most of these people, and I still speak to them regularly now. So this is really important to realize that outdoor experience is about the people that you share it with. So now we're into the Sierra Nevada. This is I guess the showcase section of the Pacific Crest Trail. It's 300 miles of total wilderness in high mountains, and the challenge level just gets ratcheted up. So high passes, snow and ice, and bears and mountain lions, and a lot of things that you're not sure about. So we've really been looking forward to this, but at the same time, everyone's a little bit apprehensive. So this is me with my bear canister. So to protect the wildlife, there's designated sections on the trail where you have to keep your food in a protective container. This is not so that the bears don't steal your food. It's so that the bears don't learn that hikers are associated as an easy food source, because they have to then relocate the bears or put the bears down, and we don't want to have any impact on the wildlife at all. So we're all happy. Everybody's happy to comply and try and keep all of their food and any kind of items with an odor in those bear cans, and you store them away from your camp at night. So then we head into the Sierra, and one of the great things about this trail is that it goes very close to the highest mountain in the lower 48 states of the US, Mount Whitney, and so we can take a day to summit this mountain, and we decided to do it early, and we left at camp at 1:30 in the morning,
and set up there for the sunrise. So it's a pretty special moment to get to the top of the mountain and share that with your friends, your new friends, and yeah, quite a challenge for me. My headlamp batteries died, and I was trying to keep up with people that were faster hikers than me, so I could see where I was going with thousands of feet drop to the side of me. So yeah, big challenge, but you can do hard things, and I was able to keep going. Which leads to the next realization for me was that you don't spend long on the mountaintop, and I mean that in both literally and figuratively. So you spend most of hiking and most of life either climbing up or climbing back down again, and you have to really relish and enjoy that process of the climbing and the descending, and make sure you're enjoying all of it, because however great reaching the goal and the summit is, it's a very fleeting moment, and if you're not enjoying the rest of it, you're not relishing every moment of the struggle to get there, then you're missing out. So don't expect reaching the top to solve all your other problems. It's not like that. Enjoy the process. So we kept going through this untouched environment. It's as if they've just taken the Alps and emptied everybody out. No roads, no villages, no power lines, nothing. There's absolutely no development at all for 300 miles through these mountains. It's really a truly unique experience. And as you can see, you have all of this in India many, many times over. So we really can make these mega trails a world's destination. I'm sure of it. This is me on the highest point on the trail, just over 13,000 feet, Forester Pass. So we're hiking over a pass usually once a day, sometimes twice a day, depending how high and how spaced out they were. But not doing as many miles because obviously